वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Hi everyone, welcome back to Programming World channel by Muskan Gupta. Today's question is one of the easiest categories, but it is the most asked question in all the companies that you can think of, which gives you a decent package or a good package of around 20 LPA plus if you are residing in India. And if you are residing out of India, you can expect that to be 100k and more with respect to which companies you are interviewing for. But this question is really important and has been asked by almost all the good companies like FAANG. And apart from that, there are lots and lots of different companies, let's say Bloomberg, Yahoo, etc., that have also asked these questions in their interviews. This question is kind of an easy category, and it also depends on the interviewer that what they want to learn from you or what they are trying to actually grasp you, like through the interview process, in the interviewing time, which is 1 hour. What are they trying to infer about your personality? Are you like a good problem solver? Are you a good adaptable person? Or are you a more opportunistic person who is like, who doesn't like fears when they see a different problem? The problem solving and the thought process could be judged from this simple question because it has more than 10 plus correct solutions. Even if you talk about, let's say, linear time complexity, and so it has multiple solutions. So this what makes you differentiable from other people. Seeing these other people, let's say if they have seen this question in 10 or 12, let's take an example that people have seen this question 10 times and the acceptance rate out of these 10 is 6 people or 6%. So where the 4% are getting wrong? Most of the people who are selected for the interview process are expected that they are good in programming languages, because sometimes you are also given the online assessment on which you are pre-accessed and then you are called out for an interview. So once they have cleared the stage 1, that proves that they are actually capable. Then what are the mistakes that they make while answering this question that leads to their rejection? So don't worry and don't get overwhelmed, because we will be discussing all of these in today's video. So don't try to skip it, because everything, like each and every point, we will be discussing some of the quick and nice facts that would be useful for you. If you see this question next time, then you would be more than ready to attempt it in at any point, even on the phone interviews. So let's ask about what are the significance of this question, because without significance, nobody does anything. The pattern that we follow is we discuss the
significance, let's say in mang companies or FAANG companies. FAANG companies is like now replaced by mang, but let's just take that FAANG only. So in the FAANG companies in past 6 months, the statistics for this question has been asked in the interview process is 30 plus times. Within 6 months, this has been asked more than 30 plus times. And I guess I'm making a mistake in statistics. So it was within the 3 months. And any of the companies that you could think of apart from these, which gives you a decent package, have asked this question at any interview stage. So this is a easy question, and आप इसको नॉर्मल जो आपका इंटरव्यू चलता है विच इज़ लाइक 1 आवर और 1.5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन वर्चुअल और ऑन साइट इंटरव्यूज, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा जा सकता है एंड फोन कॉन्वर्सेशंस में भी. सो जिस स्टेज पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सेस करना है और उस तरीके से सॉल्व करना है. ओके, लेट्स से अगर आपसे ये फ़ोन इंटरव्यू में पूछा गया है तो आप अपनी सारी अप्रोचेस डिस्कस नहीं करोगे. Don't discuss all of your approaches when if it is asked in a phone interview. So that is one of the major things that you should focus upon while before attempting this question. अगर ये फोन इंटरव्यू में पूछा गया है so you would at least, let's say maximum, you will discuss 2 approaches. One would be your brute force and the second one should be the optimized one. Optimized one we'll be discussing along with the brute force approach, the pattern that we follow every time from the start till the end, so that you can think of that how to improve the thought process. So this question अगर ये फोन इंटरव्यू में आता है तो 2 अप्रोचेस से ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी है. वेयर एज अगर ये ऑन साइट में आता है एटलीस्ट डिस्कस 3 अप्रोचेस बिकॉज देयर आर मैनी. ओके, सो फर्स्ट यू मे कम ऑफ, लेट्स से कोई लूप लगाकर सॉल्व कर दिया, कोई कैसे सॉल्व कर दिया, पर यू हैव टू टेक लाइक द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. ओके, सो क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस के बारे में पता चल गया. नाउ लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन लाउड एंड सी कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे और हमें इसमें क्या करना है. गिवन एन array nums of size n, okay, return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. Okay, so अब यहाँ पर इसके follow up questions क्या हो सकते हैं? What could be its follow-up questions on this? You have read this and you already know कि okay ये simple easy question है and I'll be able to solve it. But interviewer won't mark you कि आपने कितनी जल्दी solve कर दिया. That is one of the factors on which he or she is marking you. One of the factors, not every factor. So आपने question पढ़ने के बाद you have to think of different edge cases and test cases जो इसमें बन सकते हैं जहाँ पर आपका question fail like code fail हो सकता है या आपको यहाँ पर clarification चाहिए. This thing, or I should say ये approach is useful for at every place irrespective of situation. You will be working in a company, you will be having somewhere clients as well. Now if you're not getting their requirements right, how can you propose a solution that works according to them? तो requirement analysis is very very necessary. और जो हम follow up questions पूछते हैं ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो करता ही है, साथ में इंटरव्यूअर को हमारा थॉट प्रोसेस भी बताता है कि वी कैन थिंक ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स ऑन विच यू आर मार्क्ड अपॉन. इस पर भी इंटरव्यूअर ध्यान देता है और आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स देता है. ओके, सो यहाँ पर उन्होंने एक एज केस जो हो सकता था उसको आंसर कर दिया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे. तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा. दैट्स गुड. Now, for this question, your follow-up questions could be, can the numbers be negative as well? Okay, this won't be impacting the answer or code anyway, but this basically says कि okay, you are also thinking of that scenario. Okay, कि negative भी exist कर रहा है. अब negative पूछना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था? यहाँ पे हम different approaches लगा सकते हैं. हैश मैप को एक तरीका सॉल्व करने का एरे से भी होता है. ओके, हैश मैप के अंदर हमारे पास जो कीज हैं दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. पर अगर हम एरेज के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं, देयर इज वन मोर वे टू मेंटेन अ हैश मैप अपार्ट फ्रॉम द हैश मैप स्ट्रक्चर इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड दैट इज एरे, वेयर इंडेक्सेस वर्क्स एज योर की एंड वैल्यूज वर्क्स एज द लेट्स से डेटा विच इज स्टोर्ड एट दैट इंडेक्स. ओके, तो नेगेटिव अगर हमको पता चल जाता है कि नेगेटिव है, तब हमारे पास एक चीज़ ये सॉल्व हो जाएगी
कि हमको एरे यूज करना है या हैश मैप, दैट वी नीड टू यूज एरे और हैश मैप. अगर नेगेटिव होता है तब हम हैश मैप यूज करेंगे बिकॉज नो अदर ऑप्शन, एरेज इंडेक्सेस कैन नॉट बी नेगेटिव. और अगर एरेज लाइक पॉजिटिव रहता है तो हम एरे से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट विद रिस्पेक्ट टू लाइक द डेटा स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वी विल प्रेफर हैश मैप. ओके, so majority element is the element that appears more than n by 2 times. That is clear. You may assume that the majority element always exists in the array. That's true. Now, can it be containing negative numbers? For this case, we assume that it does not have any negative numbers. Okay, negative numbers नहीं है. Then, duplicates question एक हो सकता है, but you are already sorted here. Okay, तो उसका कोई फायदा नहीं है. So I guess we are done with the question and everybody have understood that question part, what the question is trying to say and what we have to do in this case. So let's come to the approaches of or how we can solve it. Okay, so the first approach or the brute force one, देखते ही क्वेश्चन को देखते ही जो भी अप्रोच सबसे पहले स्ट्राइक होती है, just give it that section as brute force. Okay, because जो हमें देखते ही स्ट्राइक होती है, परसेप्शन ऐसा रखा गया है कि वो फर्स्ट अप्रोच ऑप्टिमाइज नहीं होती है. सो इसलिए हम ब्रूट फोर्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले. ओके, ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि हम एक एलिमेंट लें, वी आर टेकिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम एंड वी आर काउंटिंग इट्स ऑकरेंस. ओके, लाइक मैंने 3 लिया है एंड देन मैं एरे को एक्सेस करूँ तो यहाँ पर 2 है, नॉट मैच, यहाँ पर 3 है, येस. मैं एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल ले लूँ, लेट्स से काउंट, और मैं उसको बढ़ाती जाऊँ. ओके, सो दिस कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो हम कर सकते हैं. पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी? n ऑफ स्क्वायर. इज इट रियली नेसेसरी n ऑफ स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नो. फॉर दिस क्वेश्चन इट्स डेफिनेटली मोर देन एक्सपेक्टेड. सो n स्क्वायर नहीं. नाउ ट्राई टू रिड्यूस इट. अब रिडक्शन में क्या आ सकता है कि हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं और सॉर्ट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. n बाय 2 टाइम्स. अब यहाँ पर भी सॉर्टिंग में, यानी कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी? n log ऑफ n. ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है? अब यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 वेरिएशंस हो सकते हैं इसी अप्रोच के लिए. हमने एरे को सॉर्ट कर दिया और फिर 2 पॉइंटर लगाया. 2 पॉइंटर यानी कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट को काउंट करके अकॉर्डिंगली हमने उसको रिटर्न कर दिया. ओके, एंड द अनदर थिंग कुड बी, बिकॉज इट विल बी ऑकरिंग n by 2 टाइम्स, लेट्स से 2, our inputs are 2, 3 and 3. ओके, सॉर्ट के बाद हमारे पास ये आएगा 2, 3 and 3. सो अब अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास हमेशा n by 2 टाइम्स से ज़्यादा ऑकरेंसेस होनी चाहिए, यानी कि n by 2 इंडेक्स पर भी मेरे पास यही एलिमेंट होगा. तो सॉर्ट करने के बाद मैं सीधा n by 2 इंडेक्स को भी रिटर्न कर सकती हूँ एंड दैट कुड बी आवर आंसर एज वेल. तो ये चीज़ भी हो सकती है एंड दिस इज़ रियली नाइस. वी कैन फॉलो दिस एज वेल. तो यहाँ पर पता चला हमको कि n log n में भी, यानी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी, थॉट प्रोसेस से हम 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. दिस इज गुड टू डिस्कस विद द इंटरव्यूअर इन योर इंटरव्यू व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, बिकॉज ये आपके थॉट प्रोसेस की डिफरेंट वराइटीज़ बताती है. तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच करो एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. द नेक्स्ट थिंग, n log n के बाद हमारी छोटी अप्रोच होती है n. ओके, n में कैसे कर सकते हैं? So let's consider an hash map, construct an hash map based on this, then iterate the hash map over. Okay, so the approach could be, मैं इधर एक hash map बनाती हूँ 2 and 3. Okay, it could be 3 and 2 depending upon whether you are using ordered map or unordered map. Unordered map would be useful in this because we don't consider like the solution and order of the elements doesn't matter for us. Okay, तो 2 और 3 लिया है. 2 would be 1 and 3 would be 2. ओके, 2 would be 1 and 3 would be 2. ये मेरे पास हैश मैप बन जाएगा इस एरे से. अब मुझे हैश मैप पर आइटरेट करना है और जो भी मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, विच इज़ 2 इन दिस केस, उसकी की को मैं रिटर्न कर दूँगी. ओके, सो ये भी ये एक ऑप्टिमाइज और अच्छा सोल्यूशन है.
एंड सो इसको राइट कर लेते हैं एंड इसकी भी एक वेरिएशन होगी बट लेट्स डिस्कस दिस वंस वी आर डन विद दिस एंड थोड़ी सी अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी और समझ में आ जाएगी. Let me erase this to clear it out so that you guys can see the text written nicely. So yep, solution, we will construct an hash map based on the array elements and then iterate over hash map. We will be needing two variables in this case. First will be maximum, that will be the maximum value encountered in the hash map till now, and answer that will be storing the key attached with the maximum value. So this basically means we will construct a hash map बनाएंगे एरे के ऊपर और फिर हैश मैप पर आइटरेट करना है. दो वेरिएबल्स का काउंट होगा हमारे पास. दो वेरिएबल्स में कौन है? एक है हमारा मैक्सिमम वेरिएबल विच विल बी स्टोरिंग द मैक्सिमम काउंट वैल्यूज. ओके, तो एरे मतलब हैश मैप में कीज के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी उसमें जोन सी भी मैक्सिमम होगी वो उसको स्टोर करके रखेगा. एंड वन थिंग वुड बी आंसर. ओके, जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के एसोसिएटेड जो की है आंसर विल बी स्टोरिंग दैट. Now, this answer will be updated every time when we are changing the maximum value. So this is what it is trying to say. Okay, so I guess the approach is clear, explanation part is clear, and question bhi clear ho gaya hoga. Any of the doubts or anything, do mention in the comment section, and I'll definitely try to respond as soon as possible. And let's now move to the exciting part of the video, which is the coding part, where we will actually अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और देखते हैं. और दो सॉल्यूशन अप्रोचेस अभी भी बाकी हैं, सो कोड कर कर उनको भी डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट यू आर सीइंग, सो लेट्स से size, and I won't be requiring these, so let's remove that. Then construct an unordered map. So yep, we forgot the pattern. So it's 169, easy problem, majority element. Given an array nums, return the majority element and which appears more than n by 2 times, which we have discussed. Examples are these, and in this, let's say the answer is 2. Some of the constants that are given is n equals nums length, and 1 is less than like the n value, like the number of elements will be ranging in this. सो दैट अज्यूम्स कि हमको कितना अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर हमने एन स्क्वायर करा हमारी मशीन बैठ जाएगी. इट वॉन्ट बी इन अ कंडीशन टू वर्क फर्दर. ओके, अदरवाइज वेबसाइट बैठ जाएगी और कंप्यूटर में क्रोम बैठ जाएगा अगर यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउजर एज लाइक आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउजर. सो या now let's say so n is equals nums length, and these are the conditions. This condition actually doesn't matters a lot, but because अगर इसको हमको इस कंडीशन को अगर इफेक्ट करना है देन हमारा जो इनपुट है वो इंट में नहीं होगा, वो फ्लोट या डबल में होगा. बिकॉज एट द एंड हमको इनपुट एरे जो है वो सप्लाई कर कर दी जा रही है. ओके, तो हमें ऑलरेडी अज्यूम्ड है कि इंट की ही रेंज में होना चाहिए. पर अगर दीज आर एक्सपेक्टिंग कि इंट की रेंज से बाहर हो तब यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो भी चेंज आएगा. So these are some of the things which you can like infer basically just by seeing the questions and stuff. You don't have to specifically ask it. पर एक बारी एक झलक में इतना कुछ पता चलना चाहिए. So that is important and that is necessary. Okay. So yeah. So majority element is discussed and this is the thing. And let's now code for what we have discussed already. I'll be constructing an hash map which would be nums of I plus plus, and
Then I will be iterating over hash map, which will be this, and considering two variables, answer equals 0 and 0. Now if count is less than equals to it second, which is the value, okay, then we'll update this it second, answer equals it first. It stands here for iterator, and then I'll be returning the answer. Okay, so simple code where we are like constructing a hash map. This hash map is constructed, nums I, keys, and occurrences values. Auto it m count less than equals it second, तो update कर देंगे count को और answer को भी, and then we'll be returning this. So I think the code is also clear. Any doubt, any questions, do not hesitate to write it in comment section. And let's try running this on sample cases. And it passed in 0 milliseconds. So let's try submitting it. And yeah, we are better than 70.73% of the users. Again, a very nice thing. Let's submit it again. So 70 and then 11. So actually there is some problem with the Leetcode server, but now we can actually optimize this further. Seeing this approach only using hash maps, we can reduce this one loop. So I would suggest pause the video over here, think about it. We can eliminate this loop actually here. So try thinking out the ways in which we can eliminate. Pause the video and think for it. So I guess you might have paused the video and think for the same. If not, let's discuss it together. So we don't need this loop actually to maintain the count and answer. We can do it in the upper part as well, in the upper loop. Okay, so here what we'll do is at the same condition, if count is less than equals to m nums of I, then I'll be updating the count m nums of I, and answer is equals to nums of I. Okay, so now I have eliminated one loop. I don't need to iterate over it. I'm just counting the occurrences, doing the comparison again over here, and just returning the answer. So this is also like an optimized version for the previous one. We have eliminated the need of one loop, and that is a good optimization. So I would really recommend that if you are using this approach while solving, do mention it to the interviewer that okay, because this is very nice thing to mention about. And let's submit it again and we get 60%. Okay, 11 से 60, but previously हमको 70 भी आया था. So let's try submitting that again. And okay, so there is definitely something wrong with the server because it's giving us nicer things and first and then worst. Leaving that in mind, it is considering this solution is very nice, is great, but it is taking right now how much time complexity? Time complexity for this solution is O of n, and space complexity for this solution is also O of n. Can we reduce the space complexity? Many people will say, how? We cannot do it. Hash map is like the utmost need for us to solve this question. हम उसको eliminate नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा space and time complexity. But actually it can be reduced. So here comes thinking out of the box. There is one more solution for this problem that is really simple and easy. So now for this approach, I will write the code first and then will explain you. Because explanation say maybe it can happen that you are not able to relate it when I actually write the code. So यहाँ पर थोड़ा सा pattern change करेंगे and let's go with the code first over here. So for I equals 0, I is less than n,
I plus plus. Okay, so here I'll be taking one more variable c. Okay, if c equals 0, I will be initiating it with nums of I. Initially it would be 0. Now here I will be maintaining my answer, and this answer would be containing what? Wait, actually here will be the element. The count would be plus is equals to, if answer is equals nums of I, then we'll increment this count, means we have already encountered that element. हमने उस element को पहले भी देखा है और अब हम just उसकी occurrence बढ़ा रहे हैं. Okay, otherwise we'll do -1, and then here we'll be returning answer. Okay, so let's run this first. As you can see, it is getting solved. So let's try submitting it, and let's say okay. So it gave us a wrong answer in this case, which is 3, 3 and 4. Let's dry run this. So if c is equals to 0, which is in first case it would be, answer is equals to nums of I, and answer comes in 3. Now count plus equals answer equals nums of I, yes, then it will be incremented by 1. First condition true. Second, don't satisfy this thing, so we'll come down there and we'll increment it again, so count becomes 2 in this case, and then comes the answer, means on the third iteration we would be coming here and c is not equals to 0. I made a wrong thing over here, so I was considering it with c. Okay, but c is not doing anything over here, so I have replaced this with count, and I wasn't requiring c variable here, so I have replaced that as well. And now the code is correct, so let's see running it. Does it run fine or not? Yes, so it ran successfully, and let's try submitting it. Submit कर देखते हैं अब इसे, and we have this nice solution 797.57, which is actually really good. So on 10 you have secured 10 score, and the space complexity is 93.13, which is again really good. Normally what will happen is, if you score let's say above 6 out of 10, you are selected. So यहाँ पर we have secured how much? Cross approximately 10 on 10. So congratulations, we have solved this with the maximum, like let's say the bestest approach. अच्छे से हमने इसे सॉल्व करा है. अब इस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तब आंसर के अंदर नम्स ऑफ आई को डाल दिया जाए, और फिर अगर आंसर मेरा नम्स ऑफ आई के बराबर है तब मैं ऑकरेंसेस को प्लस प्लस कर दूं, अदरवाइज मैं ऑकरेंसेस को माइनस कर दूं. ठीक है, तो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट मी गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन पार्ट ओवर हेयर. लेट्स रिमूव दिस. सो इन दिस केस इट सेज दिस थिंग. ओके, अब कोड के अकॉर्डिंगली आई इज इक्वल्स टू 0, काउंट 0 है. आंसर के अंदर हमने नम्स ऑफ आई डाल दिया. आंसर में मेरी क्या वैल्यू हो गई है करंटली? Now right now my answer is, it would be 2 in this case. Okay, so let's come over here. Answer equals nums I, yes. तो count की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? Let's say c and t. count की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इस केस में? 1. Okay, now again comes 2. Condition would be true, yes. Answer plus plus, so this would be 2 in this case. Okay, then comes 1. Answer equals to this? No. So this condition would be false, and count would be decremented here, so it would be 1. Again we encounter 1, it would be 0. Again we encountered 1, condition not true. So but here this answer will be, in this case, on the fourth number, let's say for this num, the count will be 0. So when this third number comes, answer will be 1, and this will be equal, so count value will be 1 for this case.
आंसर की भी हमारी 1 हो चुकी है। अब 2 पर आएगा, तो पहला 2 जब इसने एनकाउंटर करा, काउंट विल डिक्रीमेंट टू 0 बिकॉज दैट्स नॉट इक्वल, एंड व्हेन नेक्स्ट 2 विल कम, जब अगला 2 आएगा हमारे पास, तब काउंट की 0 है तो आंसर में हम इस नम्स ऑफ आई को इनिशियलाइज कर देंगे, तो इट वुड बी 2 अगेन, एंड काउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2 in this case. Okay, sounds bit complicated, but let's discuss this like, so let's now type it, because sometimes what you don't understand visually, maybe from the typing it gets a bit easy. Okay, so we will be running a loop where we will be having two variables, one which will be maintaining roughly the count of elements we are encountering, and the other variable would be that would be storing the actual value that we will return. Okay, तो एक्चुअल वैल्यू जो हम रिटर्न करेंगे वो, इफ count equals 0, then we will be reinitializing our answer. If not, then we would be incrementing it if we encounter the same element, else decrement it if we don't encounter. ओके, तो काउंट अगर हमारे पास 0 0 होता है तब हम उसको रीइनिशियलाइज करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे और नीचे आकर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तब वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, +1 -1, सो हेयर इट इज गिवन एन इंटीजर, तो काउंट की वैल्यू हमारा ये काम कर रही है, एंड submission, it's 10 on 10, so congratulations. But so now right now we are done with the question part, coding part, explanation part, but don't think to go anywhere, because heart of the video, some good nice tips on how to behave in interview and how to be a better person, which interviewer also likes, and we will be discussing it. So heart of the video. सो आज की बोनस टिप जो आपको मिलने वाली है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल से, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग थ्रू मुस्कान गुप्ता, इज seize every opportunity that you can and become the best version of you. Wherever you see an opportunity, no matter at what stage of life you are, if you see an opportunity which can help you being grow, then seize that. कोई भी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी लगती है, कोई भी ऐसा मौका जो आपको लगता है कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से भी बदलते हैं, पर बुरे में क्यों जाना, लेट्स सी द पॉजिटिविटी, ओके, एवरीवेयर. सो इफ यू सी द अपॉर्चुनिटी दैट कैन चेंज योर लाइफ, दैट कैन चेंज यू, then don't let it go. No matter how much successful you are, no matter how much stable you are, opportunities and success has no bars. Only sky is the limit. Only sky is the limit, and that means there is no limit. Okay, so कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ भी ऐसा आपको दिखता है कि या दिस कुड बी यूजफुल फॉर मी, या फिर इसको ग्रास्प करना चाहिए, इसे नहीं जाने देना चाहिए, देन डोंट लेट इट गो. Doesn't matter how much hard it appears at the start. The harder it is, the better you will be.
in my life throughout, there are many circumstances in which I think I should be doing this or not. No, this is very difficult. I might not be able to do it. And this is how, but that also pushes me that yes, now I have to do it. The motivation that you get to do for to do something is basically the stronger opposition you have. If you guys have seen Mission Mangal movie, तो जितनी स्ट्रांग आपकी ऑपोजिशन होती है उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलता है. पर यहाँ पर आपकी ऑपोजिशन कोई नहीं बल्कि आप खुद ही हो. यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन whether you want to grow or not. If not, doesn't matter how many opportunities you see. But if yes, then don't let the difficulty parameter stop you from seizing that. Okay? Because once you will be done with that, you would be a better version of you. And let's discuss the benefits because without benefits nobody does anything. बिना मतलब के या बिना कुछ मिले हुए आजकल कोई कुछ भी नहीं करता. So let's move on to the benefits. And the benefits is experiences and knowledge is never wasted. आपके जो भी अनुभव रहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड, आर नेवर वेस्टेड. और पढ़ाई आप कितनी भी कर लो कभी वेस्ट नहीं होती है. एट द स्टार्ट लगता होगा कि ये तो अभी तक यूज़ नहीं आया, हमने कॉलेज में ये पढ़ाई करी थी पर काम में तो कुछ भी काम नहीं आ रही है. नो, दैट डजंट हैपन. कुछ भी पढ़ा हुआ और कोई भी एक्सपीरियंसेस कभी वेस्ट नहीं होते हैं, नो मैटर एट विच केस और एट विच स्टेज ऑफ लाइफ यू आर. बिकॉज these all help you to basically these all helps you to increase your decision making capabilities. जो गलती आपने पहले कर दी, अगर बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो जो गलती आपने पहले कर दिया आपको वो दोबारा नहीं करनी है. एंड नॉलेज तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को समझने का हमारा जो होराइजन है उसको ब्रॉडन करती है. सो डेफिनेटली गो आउट फॉर दीज टू थिंग्स, दीज आर नेवर नेवर वेस्टेड. ओके, तो इसीलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, वेदर इट इज रिलेटेड टू एन एक्सपीरियंस और वेदर इट्स रिलेटेड टू नॉलेज, डोंट लेट इट गो. एंड द अदर थिंग इज रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स हैव नो लिमिट. रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स की कोई लिमिट नहीं होती. यू माइट नॉट नो कि द पीपल यू आर कनेक्टिंग ऑन लिंक्डइन नाउ मे बी योर इंटरव्यूअर नेक्स्ट वीक. ओके, सो यहाँ पर जो आपने बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लिया अगर उनसे, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू इन द इंटरव्यू. सो यहाँ ये चीज़ें आती हैं. पीपल सी ओनली वन पर्सपेक्ट, बट आई ट्राई टू expand that whole horizon so that you can get the utmost. So these are the two things that you should be taken care of. Every opportunity, don't let it go. Whatever opportunity you have, if you truly feels that it will help you becoming a better version of you, don't let it go. Seize it. And with this awesome bonus tip, we come to the end of the video. If you like today's video, today's problem, today's bonus tip, then do not forget to like, share and subscribe the channel. Share this video with your friends guys because sharing education is really a good deed. And let's meet you in the next video. Till then, stay safe.